आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीन की जिसने सब कुछ चेंज कर दिया था। और ये सीन मेरे लिए आया था। एक सेकेंड। ये सीन मैंने देखा था। दिस सीन इज फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीन फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स टुडे एंड इट इज द रेड वेडिंग वाला एपिसोड। ओ शिट, लाइट बंद हो गई। रेड वेडिंग बोलते ही लाइट चली गई। So I will be talking about the Red Wedding episode and today, and मैं आपको दो चार वीडियोस दिखाऊंगा why I consider it to be the greatest scene of like Game of Thrones शो बहुत बकवास हो गया था लास्ट के सीजन्स में, बट वो एक सीन है, उसकी जितनी इम्पोर्टेंस है मेरे को लगता है कि वो कभी कम नहीं होगी। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग्स एवर एंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लेट मी शो यू अ फ्यू थिंग्स। मैंने गूगल क्रोम शेयर कर दिया। कूल 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 कूल। यूट्यूब। सो रेड वेडिंग, आप में से कितने लोगों ने रेड वेडिंग वाला सीन देखा है? मतलब, और अगर बाय द वे किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, बट अगर अभी तक नहीं देखा तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा अब जाके ये शो देखो। अरे मेरी लाइट बहुत, जब भी मैं रेड वेडिंग बोल रहा हूँ ना, रेड वेडिंग, तो अब हम रेड वेडिंग का एक सीन देखेंगे छोटा सा। गाइस पहले तो बताओ, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? कैन यू हियर इट? दिस इज आदित्य, दिस इज नॉट द फिनाले, दिस इज द एपिसोड द रेन्स ऑफ कास्टमेयर। तो हम इसके सीन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू डू एन एनालिसिस ऑफ द सीन आल्सो, और मैं काफी कुछ बताने वाला हूँ। आप लोगों को पहला ट्रिविया देता हूँ। जो ये तीन लोग खड़े हैं ना, जो रेन्स ऑफ कास्टमेयर बजाना चालू करते हैं, द गाय स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, ही इज द ड्रमर ऑफ द बैंड कोल्ड प्ले। अगर आप सर्च भी करोगे ना तो कोल्ड प्ले बैंड ड्रमर गेम ऑफ थ्रोन्स, सो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। हाँ या ओके, सो हिज नेम इज विल चैंपियन। सो विल चैंपियन वाज द वन जिन्होंने बेसिकली लाइक एक ये अपने यहाँ पे देखो बहुत सारे इनके कैमियो वाले वीडियोस हैं। मेरे को अभी भी याद है, कितने साल हो गए, सीजन 3 कब आया था? आई मस्ट बी इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज जब मैंने ये देखा था, और मेरे को पता था इस एपिसोड में रेड वेडिंग से रिलेटेड कुछ होने वाला है। एंड मतलब क्योंकि किताबें तो पहले आ गई थी और बहुत ऐसे सुनने में आता था रेड वेडिंग में कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, तो मेरे को पता था। एंड एपिसोड 9 था तो आई न्यू एपिसोड 9 में कुछ होने वाला है। बट व्हेन दिस एक्चुअली हैपेंड, लाइक इट ब्लू माय माइंड व्हाट हैपेंड। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। Your Grace. अभी देखना गाना रुकेगा। Your Grace. I feel I've been remiss in my duties. I've given you meat and wine and music, but I haven't shown you the hospitality you deserve. My king has married, and I owe my new queen a wedding gift. Rob! Rob!
60 सेकंड में कर दिया था ना, लाइक आई शो यू समथिंग, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बंदा है जेरेमी जानस जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और उसका मेरा ऑल टाइम फेवरेट वीडियो है, ये मूवी रिव्यूज करता है, काफी तगड़े इसके मूवी रिव्यूज होते हैं। ये वीडियो मैंने देखा था जिस दिन आई थिंक 7-8 साल पहले जब मैंने एपिसोड पहली बार देखा था। मैं इससे ज्यादा किसी चीज से रिलेट नहीं करता था वे ही टॉक्ड अबाउट दिस सीन ना, क्योंकि अब इम्पैक्ट खत्म हो गया, इन लोगों ने शो बाद में बहुत खराब कर दिया, बट व्हेन दिस थिंग एक्चुअली गेम ना तो लोग पागल हो गए थे। तो अब हम थोड़ा जेरेमी जानस का वीडियो देखेंगे। First of all, I'm going to let you know, if you're not caught up... Yeah. So that happened. But first of all, I'm going to let you know, if you're not caught up on Game of Thrones Season 3, don't watch this video. And if you have that thought in your mind, like, well, I'm caught up, but I don't see a reason why he's doing a video now, you're not caught up. Go catch up. For the rest of you, thanks for sticking around. And yeah, I'm a little unkept today. I'm unshaven. Why? Because I'm in grieving. Because I'm allowed to be. Because I saw that shit. Shaving doesn't matter anymore. Because the Starks are dead. Well, all right, correction, they're not all dead. There are still a couple of Stark kids out there. But for the most part, yeah, they're wiped out. We're gonna talk about this shit because this was some really monumental shit. Once in a while I see things that I'm like, that's worth doing a video on. This wasn't just something though. This wasn't a thing that's worth doing a video about. This was the Red Wedding. I had no idea. I haven't read the Song of Fire and Ice books. I thought Filch from Harry Potter was being all hospitable and shit. We were there for a wedding. Fuck, it doesn't even... I'm getting ahead of myself. I'm gonna back up. I'm gonna explain what happened. And in no way, shape, or form is my explaining what happened gonna capture the rapture and tragedy of the moment. But we're gonna try, because I want to talk. I need to get it out. It was the first thing I thought, being paralyzed in just speechlessness. I thought, I need to do a video when I can do a video about it. For right now, I'm gonna curl up in the fetal position and sleep for 13 hours because I'm now emotionally drained. Okay, backing up. What happened? We all knew that Robb Stark was... So, ये बताएगा क्या होगा, इसको थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ nice. And then Filch was like, I'm sorry, I've been a bad host. Robb, you came here with your nice wife and I just want to extend you. Oh, by the way, जिन लोगों को नहीं पता, this actress जो रॉब की वाइफ का और soon to be wife, I don't remember, इसका रोल जो प्ले करती है ऊना चैपलिन है, चार्ली चैपलिन की granddaughter है. So, our little trivia. You a thank you or whatever the fuck he tells them. Warning, most normal people who have had a pretty good childhood in their life, or generally speaking still have a soul, might find the description of these events a little unsettling. However, I saw the events, so I'm right there with you. Okay, you've been warned, here we go. Because it happens, this guard goes right up to her, the pregnant chick, takes a knife and just gut stabs her a few times in horror. You're watching this and you're like, you can see reaction shots on YouTube of people watching what is called the Red Wedding. Chicks are all curled up in balls like this, and dudes are just like, That's what I was doing. I was one of these people. I was just like this. I was like this in horror for about 5 solid minutes. Robb gets shot with a couple arrows. Everyone's getting massacred in this place. Filch is just, laughing because he's a dick. Catelyn Stark gets hit with a couple arrows. The direwolf gets shot. Killed. Dead. That's when I knew. I was like, well, Robb's dying because the direwolf is dead. Robb clutches his dead wife in his hand. She's dead. He has his hand on her stomach. It's all gross and shit. Catelyn Stark grabs Filch's wife by the hair, has a knife to her throat, and she's like, let us go and I'll forget this or I will kill her. Robb stands up. You can tell he's done. He's like, no. She's like, Robb, leave. He's like, you can tell there's nothing out there. They've lost. This dude comes up and says the Lannisters send their regards, stabs him. He's dead. Catelyn Stark freaks out, just slices this chick's throat. She's screaming. This chick dies. This dude comes up to Catelyn Stark, slices her throat. She drops to the ground. She's dead. And right now you're like, oh yeah, it's a nice little Greek tragedy. Okay. No, it's not just a Greek tragedy. Abhi just explain karega na. This is why I'm showing it to you. This is not like any other thing. क्योंकि तब तक मतलब आप कोई शो देखते थे उनमें कभी कोई मर्डर होता था, like of a character which you liked and like that person died. But this particular show, like in this particular scene, is why so important because इसमें एक साथ एक पूरा का पूरा Winterfell, the most likable people, they die in like 60 seconds, all of them. It is the most monumentally disturbing thing I've ever seen on any screen whatsoever. Yeah. और ये जो लाइन बोलता है the most monumentally disturbing thing on any screen. तो मतलब और तो मूवी से कंपेयर कर लो, किसी शो से कंपेयर कर लो, किसी गेम से कंपेयर कर लो. Any screen, movie screen, TV screen, computer screen. Move over 2 Girls, 1 Cup. Move over meetspin.com. This is like the 9/11 event of television.
this is where the title came from, the 9/11 event of television. Might actually include 9/11 footage that was shown on television. All right, that's pushing it. But you get what I'm saying. It's that monumentally disturbing thing because we all get attached to the characters at this point. Pregnant woman getting gut stabbed already, it puts you in a bit of a mood. And that was just the warm-up round. When it was done, my friends and I, we were just sitting there and we were completely silent. It would be in bad taste to say anything. So we just sat there and I just wanted to be like, do you want to cool down with an episode of, I don't know, Castle, read a couple of chapters of Mein Kampf, something a little less disturbing? It's one of those things you need to reevaluate who you have pitched Game of Thrones to. There are इसके बाद लाइक ये थोड़ा ओवरसेल करता है गेम ऑफ थ्रोन्स को, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स इसके बाद काफी खराब हो गया था. मैंने एक्चुअली रेड वेडिंग के बाद ढंग से कभी देखा नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स. ऑब्वियसली आई सॉ द होल थिंग बट आई लॉस्ट इट बिकॉज फॉर मी रेड वेडिंग वाज दैट इवेंट दैट आई न्यू कि किसी उसको कभी वन अप नहीं कर पाएंगे. आई ऑलवेज न्यू इट कि रेड वेडिंग को वन अप नहीं कर सकते और वो कर भी नहीं पाए थे. उसके बाद देयर वाज मतलब इनका एक वो होता था कि लाइक दे विल गेट अ बिग कैरेक्टर, उसका मतलब उसकी लाइकेबिलिटी बढ़ाएंगे और उसको लास्ट तक मार देंगे. जीआरआरएम रेड वेडिंग, तो ये जब कोनन के शो पे आया था ना, तो इसमें इसको एक्चुअली वो सीन्स दिखाए थे. लाइक इट इज आल्सो वेरी फनी. Huge response to this last show, as I said, and you have spent years and years writing these stories and these characters. By the way, George R.R. Martin ने कल ही ट्वीट किया कि for the first time, oh shit, like let me show it to you. For the first time, he is like writing something, इसका flow बना हुआ है और ये लिख पा रहा है. तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो वो जो ट्वीट है उसमें जो टॉप कमेंट है ना, like it is something else. तो कल जॉर्ज मार्टिन ने ये ट्वीट किया था. I have to confess, after a year of pandemic, I am showing signs of cabin fever. If nothing else, the enforced isolation held me right. I'm spending long hours every day on Winds of Winter and making steady progress. Someone commented this. Steady progress? I've graduated high school and college, got married, had 2 kids, built my career, ran a marathon, and 11 long distance relays, became a vegetarian, stopped being a vegetarian, and got really good at pivot tables since you started this. So he is known for like writing very slowly, because there is this one interview where he asked Stephen King also कि आप इतनी fast कैसे लिखते हो, because Stephen King बहुत fast लिखता है. And he is like कि if I'm having a good streak तो मैं हो सकता है 1-2 chapters लिख लूँ 6 महीने. And this is how slow George R.R. Martin writes. And not knowing what the reaction would be, there's a clip that's on the internet right now of fans reacting, YouTube video of fans reacting to what you call the Red Wedding, which was the most stunning thing many of us have seen in television, maybe ever, certainly in a long, long time. So let's take a look now. You get to watch real fans reacting to the scene on Sunday. Let's take a look. ये वाला बहुत पसंद है. No! Oh, shit. Oh. You guys knew about this? You know what? That's why this is the best show of all time. Must be gratifying. I like that last guy. Yeah, last guy. Of course, all of those clips were set up by people who had read the books 13 years ago and knew it was coming and wanted their friends and relatives and loved ones. Because they knew it was happening, so they got real reactions. They knew that it was coming, and they wanted innocent people to get their reactions. That's amazing. I saw one of them saying in comment, "Now you know why your nerdy friends were really depressed 13 years ago." Yeah. So ये जॉर्ज आर आर मार्टिन का वो था लाइक द रेड वेडिंग थिंग. इसके बाद सीजन 4 में भी वो एक ओबेन करके कैरेक्टर आता ना जिसकी आंखें फोड़ देते हैं वगैरह. तो वो वही चीज की जो उन्होंने रेड वेडिंग में की थी, बट उसको वन अप नहीं कर पाए. सम पीपल से दैट बैटल ऑफ बास्टर्ड्स इज लाइक रियली रियली गुड, बट आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दैट एपिसोड. मतलब सही था, बट आई थिंक आई स्किम्ड थ्रू सीजन 6 and 7. मैंने लास्ट सीजन पूरा ढंग से देखा था और सीजन 4 और 5 देखा था.
There are people, generally speaking, if you're a human being, I've been like, you need to watch Game of Thrones. There are now some people where I'm like, I don't know. This might not be your thing. It's one of those events, it'll separate the fair weather fans from the hardcore fans. If people were like, oh, I like Game of Thrones, but you know, this will be the thing where they're like, yeah, I think I'm done. And if you do, it's fine. It just means you're a human being. If you keep watching it, you're also still a human being, but you're kind of like me, I guess. I don't know what that means, but the point is, we all found it messed up. No guy tugs one out after watching that episode. None. Any guy, doesn't matter who you are, you could have the hottest Scandinavian chick on your lap trying to fuck your brains out, and you'll just be like, oh, no, not today. I'm not. And that's just how it'll be. Before this episode, I had one thing on my mind for 3 weeks. One thing, and that was, does Theon Greyjoy still have a dick? I don't know. I think they took it. I'm not sure. I'm pretty sure it's gone. That dude's had a pretty bad couple of weeks. Now it's just not on my mind. There are priorities because I walked out of the episode going, well, that was the Manson home videos. That's interesting. Probably not what I would want to watch every day or ever. I have not had any fictional piece of work impact me like this. Because this line, no, matlab, this is like over, like after all those years, I'm revisiting this scene because I haven't had any piece of fictional scene. एक है जो इसके closest है, maybe शायद इससे better है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. Can anyone guess which that scene is? Vince Gilligan का एक show है उससे. Better Call Saul नहीं, Better Call Saul से एक पहले से आया था Breaking Bad. मेरे यहाँ पे भी आ जाएगा Grey Knight State Ending. So, oh no, so this is not the episode, by the way. Breaking Bad ka episode number. So it's, I always type in Lily of the, season 4 ka last episode. Jisme he says, Ivan. Again, by the way, guys, Breaking Bad jisne nahi dekha hai, there are huge spoilers coming in front of you guys. तो आप इसको बंद कर सकते हो. और तो बेसिकली उसके एंड में ये गाना बजता है जब वो बोलता है ना आइवन. ये मैंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म के लिए भी यूज किया था. ये नोरा जोन्स का जो ट्रैक है. नहीं आप लोग, हाँ, फ्रिंग्स डेथ की बात जब होता है, जब पता चलता है कि कैन आई गिव स्पॉयलर्स नाउ, मैंने 2-4 डिस्क्लेमर दे दिए. हाँ, जब पता चलता है इट वाज एक्चुअली वॉल्टर वाइट हु हैड पॉइजन्ड द किड. तो जब, और वो पता चलता है, वो जो एक स्लो ट्रैक इन शॉट होता है कि मतलब बच्चे को सिर्फ एक ही चीज पॉइजन कर सकती थी, वो एक प्लांट था लिली ऑफ द वैली. और जब वो फिर लास्ट में जो पैन शॉट आता है ना, मैं दिखाता हूँ. मतलब गस मर गया है, सब खुश है, और आप देख रहे हो ये फूल की तरफ क्यों जा रहा है. मतलब सीजन के लास्ट के 10 सेकंड क्यों आप ऐसा एक शॉट देख रहे हो. जय 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 जय. And then you read it. And I was like, oh shit, मतलब, oh fuck. I can't explain कि मैंने तब क्या एक्सपीरियंस किया था. बहुत रेयरली होता है जब आप कुछ देखते हो कि कोई फिक्शनल चीज आपको इस तरीके से मतलब इम्पैक्ट कर पाए. तो लिली ऑफ द वैली इसके क्लोजेस्ट आया था. तो मैंने पहले भी ये बहुत बार बोला, बट बहुत लोगों को पता नहीं है कि ब्रेकिंग बैड का एक पॉडकास्ट है जिसमें रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. सो ये इनसाइडर पॉडकास्ट है. ये आप लोग ना किसी दिन पूरा देखना. इसके इसका जैसे इसमें विंस गिलिगन आते हैं और ये लोग सारे आके बात करते हैं. तो जैसे ये था सीजन 4 एपिसोड 13. दिस वाज फेस ऑफ. यस, मैंने लाइक भी किया हुआ है, 26 लाइक है सिर्फ. प्रियांश जाने बोला है कि लीप लिपी में किया, सो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को. मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी लीप लिपी, तो मैंने वहीं से इंस्पायर होके उसके लास्ट सीन में मैंने वो यूज किया था ट्रैक. तो जिसमें एक बंदे की कहानी थी जो 29 फेब को बॉर्न होता है और नॉन लीप ईयर है, तो बहुत परेशान है. अशोक लोखंडे सर के साथ हमने ये बनाई थी. तो ये जिन्होंने नहीं देखी है,
तो लास्ट में आता है वो. बढ़िया से हमने ऐसे मेडिटेटिव सी पिक्चर बनाने की कोशिश की थी. ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लोग 2 जने बैठे हैं और इसमें भी मैंने एग्जैक्ट ट्रैक वाली चीज करने की कोशिश की थी. तो जब कैलेंडर आएगा फेब का, ये आई थिंक किसी ने कैच नहीं किया था आज तक. मैं इसके बारे में शायद पहली बार बात करूँ. मैं सोच रहा था कोई तो बताया यार. मैंने मतलब इतना बड़ा एक होमाज देने की कोशिश की थी बट नोबडी कॉम्स. और ये जो खाली ब्लॉक है अब इसके अंदर ट्रैक इन होगा बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेड 29th of Feb जिसके बारे में पूरी पिक्चर थी. तो ये यहाँ पे क्या था. अब हम इसका वो देखते हैं. एक सेकेंड लगा इसका. ब्रेकिंग. Hey everybody, welcome back to the Breaking Bad Insider podcast. We're here to talk about episode 413. I'm here with Vince Gilligan. Hello. Melissa Bernstein. Hello. Bill Pulaski. Hello. Tom Schnauz. I'm not sure why I'm here. Tom Schnauz बहुत तगड़ा बंदा है. इसने काफी एपिसोड्स लिखे हैं. But I'm here. Skip McDonald. Hello. And Andrew Ortner. Hey there. Hey everybody, thanks for coming in today. Talk about the finale episode of season 4. Yeah. So now y'all know. So we'd say what Andrew and Bill and Skip obviously is our other wonderful editor. Skip is our other editor. Bill Pulaski is our visual effects supervisor. Tom Schnauz is a writer on the show, although you didn't write this one. This one was written by Vince Gilligan, right? Obviously, it was written by Vince Gilligan. It was one of the most important episodes of the show. तो Vince ही लिखेगा. मतलब not that बाकी writers इतने अच्छे नहीं है, but it's Vince's baby, right? तो Face Off is among the top 5 greatest episodes of Breaking Bad. Yes. And Andrew Ortner is our. It's interesting how I thought I would talk about Game of Thrones, but now I'm talking about Breaking Bad because they ruined Game of Thrones so bad. Associate producer who works in post. That is correct. Cool. Okay, so Vince, I'm going to let you go ahead and take point on this because, we've been working up to this all season long, and boy, has it been a ride, and there's so many great things to talk about. What would you like to talk about first? Oh man, where to begin? मतलब ये सोच लो कि इसने मतलब ऑस्कर तो नहीं मिला इसको. आई एम नॉट श्योर इसके लिए एमी मिला था या नहीं. आई लाइक विल चेक. बट यू जस्ट मेड द बेस्ट थिंग एवर एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. देन तो मैंने ये वाला पॉडकास्ट ना, मैंने ब्रेकिंग बैड का पॉडकास्ट फॉलो नहीं किया. मैंने बेटर कॉल सॉल का इसका इनसाइडर पॉडकास्ट फॉलो किया. तो मैं मतलब विंस ने अब इसमें और ये इतना हम्बल साउंड करता है ऐसे इंट्रोवर्ट की जैसे बात कर रहा है वगैरह की. Like it really fascinated me how Vince talks. Okay, I'll bring up the first thing. So you decided to kill Gus. Oh, well, I didn't see the episode. Yeah. You got a ruiner for the top. This is the ding boom moment that we've been talking about since season. तो अब ये डिंग बूम के मोमेंट की बात करेंगे. डिंग 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 जो अपना था उसका हेक्टर सालावान का. Yes, I think. we call it ding boom. We had a card up. We have we have a master board that has cards for ideas that we plan to get to throughout the season. We had a card up. Ding boom. Oh, look at that. Yeah. What does that mean? Ding boom. What do you think it means? Now that you've seen the episode. यार ये मतलब कितना बुरा लगा जो को होस्ट कर रही है उसको डिंग बूम का मतलब नहीं पता. उसको थोड़ी तो रिसर्च करनी चाहिए थी ना. मतलब आप सोचो विंस ने सब मतलब मैं बहुत ऐसे इमोशनल हो जाता हूँ कि उसने तो इंसल्ट कर दिया यार विंस की. लेकिन कि व्हाट डज डिंग बूम. इट वाज ऑल अबाउट दैट डिंग डिंग डिंग. And he's like, what do you think it means? Oh, but I mean, ding. What is it? Ding. Oh, I get it. Okay. Now they're doing it for watching Harry's Law. That's a title right there, by the way. What? Ding boom. Ding boom. You know what? It will give it away. I think it. It will. I think it would. I think it would. Because it gets published on like IMDb. तो ये देखना और क्या 9/11 इवेंट्स हैं आप लोग बताओ. मैंने मिस्टर रोबोट नहीं देखा है. The Hector guy also got nominated for the Emmy. Oh, I did not know that.
Face Off is the fourth number in the best rated show of all time. The way they murdered GOT is the only one to claim the title. And Vinayak is saying I gassed it. Obviously, Vinayak ne मैंने आज तक जितनी short films बनाई है, Vinayak has shot them and he has made the graphic. He has done all the graphic work for them. I can recommend someone to watch entire series for that episode. Anup is saying I really agree. Which series should we discuss next? I think घूम फिर के मैं एक और पे आऊँगा. Sopranos. Sopranos में 9/11 कौन सा इवेंट आया था? Sopranos में, which is my favorite. Sopranos का एक episode है which is called Employee of the Month. This is among ये इन्होंने कट कर दिया. ये मतलब इस I wouldn't like to play it, but Sopranos Employee of the Month is one of my favorite episodes from Sopranos. और do you guys know Sopranos का भी एक podcast चालू हुआ है जिसमें माइकल मेरे को उनका नाम प्रोनाउंस नहीं करना था. ये जो रोगन के बेस पे आए थे, माइकल इम्पीरियोली एंड स्टीव शरिप्पा. तो अभी जो रोगन ने भी इन्हें बुलाया था एंड ये लोग ऐसे एडी फाल्को को लाए थे, जो इसकी वाइफ वो होती है. And I knew she was looking for alliance because she didn't know him. Audience thinks, Jesus Christ, she's so good. Look at her. She's inside. She's thinking. So anyway, it's a big fate. But listen, that is a gift because I got to work really hard. And if someone is saying कि हम ब्लैक मिरर की भी बात कर सकते हैं. ब्लैक मिरर में मेरे को पहले के 2 सीजन्स बहुत पसंद है. ब्लैक मिरर के जो पहले के 2 सीजन है ना, फिर वो मेरे हिसाब से थोड़ा कम अच्छा होता जाता है. सैन जेनिफर वाज वेरी गुड, बट उसके बाद इतना मेरे को पसंद नहीं था. बोजैक आई नेवर फिनिश्ड इट. मैंने रिसेंट सीजन्स नहीं देखे. एंड करंटली आई एम वाचिंग द लेफ्टओवर्स, जो मैं बहुत ऐसे धीरे धीरे देख रहा हूँ. आई एम ऑल्सो वाचिंग आर्य, बाय द वे. हैव यू गाइस सीन आर्य ऑन हॉटस्टार, जो सुष्मिता सेन वाला शो है जो राम माधवानी ने डायरेक्ट किया. इनफैक्ट अभी मैं एपिसोड 3 देख रहा था अभी बिफोर गेटिंग ऑन टू द लाइव. आई वाज जस्ट वाचिंग दैट एंड इट्स प्रीटी फकिंग नाइस. सो दैट वाज समथिंग आई वाज इनटू. तो IMDb पे देखते हैं. IMDb greatest TV show episodes. One second. The best rated TV show episode, Battle of Bastards. Like I said, I'm not a big fan of Battle of Bastards. पता नहीं क्या इन्होंने तो कुछ भी किया है. Friends 8.6. हाँ, Felina, Spartacus, Friends. Guys, इतने सारे Friends के किसी ने बनाई होगी. I think sort by IMDb rating. हाँ, 6 Feet Under, Breaking Bad, Person of Interest, Game of Thrones, The Reigns of Castamere, the one we were discussing. Person of Dexter वगैरह भी. I don't think this is a reliable series. Westworld, The Mountain and the Viper, जो जिसमें वो मरता है हमारा Theon helps Ramsay and Maud Callan, The Wildling Attack. हाँ, O'Brien, Prince O'Brien जिसका नाम होता है. ये यूजर क्रिएटेड लग रही है. अनूप इज राइट. हाँ, Ozymandias, ये वाली आई थिंक शायद वो है. तो दिस इज कंसिडर्ड. Ozymandias के बारे में तुम्हें पता है ये जो एक्चुअल स्टोरी है, जो व्हाई दिस एपिसोड इज कॉल्ड सो. 9.9 और किसकी है? चर्नोबिल का. ओ यार नाइस. चर्नोबिल डिजर्व करता है. चर्नोबिल तो मतलब है विंड्स ऑफ विंटर, बैटल ऑफ बास्टर्ड्स. पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखा मैंने. गेम ऑफ थ्रोन्स, फेस ऑफ. फेस ऑफ इज आल्सो फेस ऑफ की भी 9.9.
BoJack, The View from Hollywood Down, 6 Feet Under, Barry, Better Call Saul, Bad Choice Road. बैड चॉइस रोड था हमारा एपिसोड नंबर, यार हम वापस कॉल में बेटर कॉल सॉल पे आ गए. हाँ, season 5 episode 9. This was my favorite also. I even liked it more than Bagman. Bagman was directed by Vince Gilligan, but this was directed by this was like written by Vince and Peter. ये तो क्रिएटर है, डायरेक्टर थॉमस था इसका. बैगमैन इसके बाद ही है. हाँ, तो ये दोनों मतलब बैक टू बैक थे एपिसोड. तो ये था द पोएम ऑजिमैंडियस. ये चलाते हैं अपन पोएम. द पोएम इसका एक छोटा सा वीडियो है. हाँ, ये वाला एनिमेशन वाला, ये बहुत अच्छा वीडियो. A traveler from an hand. तो इन्होंने जो उस बंदे की जो 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 ये देखो पीछे वॉल्टर वाइट का वॉइस ओवर है. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. इस पोएम की जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये थी कि जो वॉल्टर वाइट का भी जो फॉल था वो पूरा इससे मैच करता था. मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था. आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बिकॉज ये जो स्कल्पचर था कि लुक एट मी आई एम द टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, वो इवेंचुअली पूरा गिर जाता है एंड उसके सिर्फ डीके बचा होता है. और वॉल्टर वाइट की भी यही जर्नी होती है ब्रेकिंग बैड में, और उस एपिसोड में उसका सबसे बड़ा फॉल आता है. तो व्हेन ही लूजेस द फैमिली, ही लूजेस एवरीथिंग. जो उसने पूरा एम्पायर बना होता है वो गिर जाता है. तो हाँ, दिए वाला जो है ना, ये काफी से माय नेम वाज अमेंडस. तो बाय द वे ये एपिसोड डायरेक्ट किया था रायन जॉनसन ने. रायन जॉनसन इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ नाइफ्स आउट. तो नाइफ्स आउट जो उसकी डैनियल क्रेग वाली मूवी है, इट्स वेरी वेरी गुड. अक्षत गुप्ता, थैंक यू सो मच यार, आपने ये पोएम बताई. नथिंग लास्ट. यस, नथिंग लास्ट. So, and free Chiroto, you got to watch episode at nearly 20 minutes monologue from titular character, his mother dies. तो यही है guys, मेरे पास आज सिर्फ ये, मेरे को ये चीज डिस्कस करनी थी. गेम ऑफ थ्रोन्स कर लिया, ये कर लिया. और कोई बचे हमारे पास एपिसोड? समुराई जैक, किसी ने देखा है समुराई जैक? आई वांट टू वॉच समुराई जैक. बचपन में देखते थे. रिक एंड मॉर्टी का भी एक एपिसोड है यहाँ पे. It's annoying why so many person of interest episodes are there. I actually wanted to talk about BoJack Horseman. If I have seen it, I've seen the first. कितने सीजन आ गए BoJack के? मैंने पहले 4 सीजन देखे थे. Then I stopped watching. क्योंकि do you want to know मैंने क्यों देखना छोड़ दिया था? I can tell you यार, तुम लोग तो देख रहे हो. तो I stopped watching BoJack Horseman because they did not intend to, but it seemed like they romanticized depression in a way. तो basically जिन लोगों को ये कहीं से validation चाहिए होती थी ना कि depression is okay and like being depressed is okay वगैरह, तो उनको बहुत फ्लारी लगता था BoJack Horseman. and जो writers थे BoJack के, they also realized कि वो जैसे उसकी स्टोरी दिखा रहे हैं BoJack की, वो पढ़ा है, like वो depressed है. उनको भी रियलाइज हुआ कि जो उनकी ऑडियंस है ना वो बहुत खतरनाक बनती जा रही है. बिकॉज
they kind of looked up to BoJack for being so depressed, and they called that out also in the last season I saw. जो अभी last year आया था, last year आया था, उसमें they called out the people who kind of, they just made it clear, don't look up to BoJack Horseman, and I liked it that way. So I think BoJack writers are one of the smartest, क्योंकि लास्ट तक आते आते उन्होंने वो कर लिया था. बट फॉर मी मतलब आई डिड नॉट, मैं थोड़ा सा वियर्ड फील करता था. यू शुड गो ऑन एंड वॉच द नेक्स्ट 2 सीजन्स. अच्छा चलो मैं देखता हूँ, मैं सीरियसली, क्योंकि मेरे को यही लगता था इसलिए मैंने छोड़ दिया था. बट देयर इज दिस वन लाइन जो उसको रोज कलर्ड ग्लासेस वाली लाइन है ना, आफ्टर एवरी ब्रेकअप आई गो एंड रीड दैट. अरे यहाँ देखते ना, rose colored glasses, BoJack Horseman. छोटा सा क्लिप होगा. Well, I'm sorry that things have been so hard for you, but that doesn't give you the right to be shitty to me. I can't be around someone who's just fueled by bitterness and negativity. Well then, what are you doing here? What happened, BoJack? Same thing that always happens. You didn't know me. Then you fell in love with me. Oh, fuck. And now you know me. You know, it's funny. When you look at someone through rose-colored glasses, all the red flags just look like flags. Oh, after every heartbreak, I come and listen to this line. Shit, मैंने वापस वो गलती की. इतने सारे red flags थे, but I just looked at the person with rose-colored glasses and they just looked like flags. This line, और ये जो starting भी इसकी बहुत powerful है. I'm sorry that things have been so hard for you, but that doesn't give you the right to be shitty to me. ये कितनी सही line है, ये तो मैं बोलने वाला हूँ बहुत लोगों को life में जाके. I am sorry like things have been hard to you, but that doesn't give you the right to be shitty to me. Fuck. और guys, do you know ये आउल की आवाज किसने दी थी? If I am not wrong, अनूप आप कंफर्म करना, because I think आप फैन हो शो के. Phoebe from Friends, Lisa Kudrow ने इसका, she gave the. Can we watch it again? Like मेरे को बहुत हिट कर गई लाइन. Well, I'm sorry that things have been so hard for you, but that doesn't give you the right to be shitty to me. I can't be around someone who's just fueled by bitterness and negativity. Well then, what are you doing here? What happened, BoJack? Same thing that always happens. You didn't know me. Then you fell in love with me. And now you know me. Fuck. Guys, गलत दिखा दिया यार तुमने. When you look at someone through rose-colored glasses, all the red flags just look like flags. Comments पढ़ते हैं इसके. We need to read the comments. Look, comments. One of the most honest and believable breakup scenes I've ever seen. The rose-colored glasses line is some poignant shit and wise. Then again, she's an owl. The rose-colored glasses quote absolutely shook me. Same thing that always happens. You didn't know me. Then you fell in love with me. And now you know me. Oh, fuck. Guys, ये गलत किया तुमने. ये नहीं दिखाना चाहिए था. You know, it's funny when you look at someone. Out of all the girlfriends, I really wanted Wanda to stay. Just noticed Wanda has a heart for a face. I actually cried at that part. She was my favorite female character. I need to take my rose-colored glasses off. I like this comment. कितना अच्छा है. You know, it took me 3 years to finally understand the metaphor about seeing life with rose-colored glasses. Optimistic nihilism. देखें क्या? Anshuman is suggesting a video. थोड़ा सा देखते हैं यार, मैं थोड़ा worried भी रहता हूँ. Copyright के issue नहीं आएंगे. We'll see a little of it. Human existence is scary and confusing. A few 100,000 years ago, we became conscious and found ourselves in a strange place. It was filled with other beings. We could eat some could eat us. There was liquid stuff we could drink, things we could use to make more things. The daytime sky had a tiny yellow ball that warmed our skin. The night sky was filled with beautiful lights.
This place was obviously made for us. Something was watching over us. We were home. This made everything much less scary and confusing. But the older we got, the more we learned about the world and ourselves. We learned that the twinkling lights are not shining beautifully for us, they just are. We learned that we're not at the center of what we now call the universe, and that it is much, much older than we thought. We learned that we're made of many little dead things, which make up bigger things that are not dead for some reason. ये मैं थोड़ा अलग से थोड़ा आराम से देखूंगा. I am not able to concentrate क्योंकि थोड़ी heavy gravity shit है. But this is really nice. Thank you so much for recommending this, Anshuman. Anup is saying Bojack lives in a series he loved. His ringtone is that series title track. Same with me. Nice. You know, one another, like, since we are talking about Bojack, my You Are 40 Bojack. This is one of my favorite scenes from the show. Yeah. Good news! You're back in my stable, and I got you the lead in a romantic comedy. Who's the best agent in the world? What? I went through hell and back today, but it was worth it because I got you a job. Aren't you excited? No. I don't know. I don't care about that. You said you wanted a job. It doesn't matter. Nothing matters. Wow, what happened in Malibu? I gotta go. Need anything else? No thanks, Laura. Go home. I'll see you tomorrow. Are you gonna head out soon? Where else would I go? Happy birthday, Princess Carolyn. Thanks, phone. You are 40. Fuck this scene. Happy birthday, Princess Carolyn. Thanks, phone. You are 40. I would like to firstly, just maybe upload here, would like to thank him for keeping the end credits because emotion tab escalate karta. Okay, let me just gather my thoughts for a bit because that line "you are 40" always hits me so hard, always. मतलब इतना ज़्यादा रियल है वो कि एक एजेंट है, एजेंट के पास घर जाने के लिए नहीं है, उसका काम उसके लिए सब कुछ है और सडनली उसके पास नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशंस हैप्पी बर्थडे यू आर नाउ 40 एंड लाइक इन अ सेकंड यू सी how fast the time passes. Oh fuck, sorry. This is like really मेरे को याद है मतलब मैंने देखो comments like भी किए हुए हैं पहले से ही. The You Are 40 simply brutal. This is rose colored glasses, ये वाली line. This was the moment when the show went from being kind of okay and silly into something indescribably brilliant. So I now remember this is from season. Oh fuck yes, this is from season 1, episode 7. Suddenly you realize कि इन लोगों के कितने emotions हैं. This video just inspired me to use internet more judiciously. Vishal is saying, sorry guys, मेरी आवाज धीरे हो गई मैं थोड़ा सा. I am just a bit shaken by like of everything we saw. I've not seen the show, but the clip with him driving in that Nina Simone song, I've seen it multiple times. J.K. Simmons की भी तो आवाज है इसमें. Fuck. चलो guys, इसको end करते हैं, but this was really nice. Thank you Vishal, Anup, Anshuman, Priyansh, Vinay. I'm reading every name. Akshat. Guys, please try to subscribe to my channel. इस channel पे I'm trying to upload a video every night. So अगर आप लोग इसको subscribe करके रखोगे तो I'll come on this channel every night and do these kind of things. जो मैं चलचित्र पे नहीं कर पाऊंगा because this is more in the casual zone कि मैं रात को आधे घंटे बैठ के कुछ research कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो हम साथ में कर पाए हो. It is for that. And but this was nice. थोड़ा ज़्यादा intense हो गया ये last में आते आते.
but I need to go now and I'll end this stream. Please subscribe karna channel. Thank you so much, guys. Thank you for watching. मैं एक बार screen stop करूँ share. चलो guys. Bye bye. नीली बत्ती को क्या? हितेश तो पिटेगा.